drug likeness and drug properties. And what is drug likeness? Drug likeness is certain properties that should be present in any compounds which for the drugs compound which for drug compounds जो कोई नहीं compounds कंपाउंड्स में जो भी किसी कंपाउंड्स को यदि हम लोग ड्रग कंपाउंड बोलेंगे तो उसके सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं ड्रग्स के, वो कंपाउंड शो करना चाहिए, तभी उसको हम लोग ड्रग लाइकनेस ड्रग डिफाइन करेंगे। और उसी प्रॉपर्टीज़ को ही हम लोग ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ड्रग लाइकनेस। सो वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में ये वाई, क्यों ये इम्पोर्टेंट है ड्रग लाइकनेस प्रॉपर्टीज एंड ड्रग प्रॉपर्टीज को जानना। सो बिफोर सब्जेक्टिंग एनी ड्रग टू द डॉकिंग स्टडी, इन डॉकिंग स्टडी में क्या होता है, इंटरेक्टिंग our drug with the ligand with our protein, in ligand with our protein, जो ड्रग जो डॉकिंग स्टडी में क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ आवर लिगेंड्स आवर ड्रग मॉलिक्यूल्स एंड विद आवर प्रोटीन एंड ड्रग लिगेंड्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन करवाया जाता है इन डॉकिंग स्टडी। सो बिफोर दिस डॉकिंग स्टडी वी must know that whether the drug we have chosen is a drug or not, जो हमने जो लिगेंड लिया है वो ड्रग है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है बिफोर द डॉकिंग स्टडी। सो वी कैन नॉट, बिकॉज वी कैन नॉट simply take molecule and cannot consider this as a drug and cannot subjected it to the docking study. So rather what we can do, we can here simply we can say that किसी भी कंपाउंड्स को सिंपली हम लोग सेलेक्ट करके एज अ ड्रग डिफाइन नहीं कर सकते और सिंपली ना ही उसको डॉकिंग स्टडी में फर्दर डॉकिंग स्टडी के लिए डॉकिंग स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो रेदर what we can do, firstly we have to do must confirmation whether molecules has a drug or not, molecules or ligands and molecules as a ligand which have taken, जो हमने जो ड्रग लिया है which is had drug taken is a drug or not with the certain properties के साथ हेल्प से हम लोग वो जो कंपाउंड्स होगा उसका ड्रग है या नहीं ये फर्स्ट तो चेक करते हैं। इन ड्रग डिस्कवरी there is a four steps it's follow 4 steps. Targeted, here we will targeted where we evaluate physiochemical and in vitro ADME properties of targeted molecules. And follow 4 steps. First, targeted hit it to the ligands and lead to the candidate identification and candidate selection. So these, for the discovery purpose, the drug compounds का drug likeness है या नहीं ये जानना important होता है।